रिसीव करते हुए उनकी उंगली के बिल्कुल टिप पे लगी है, जो कि स्टिंग कर जाता है। और खासतौर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बॉलिंग आर्म है। ये तकरीबन बिल्कुल खड़े ही थे, किसी पोजीशन में नहीं थे बॉल को पकड़ने की, और स्किड किया बॉल ने, क्योंकि अभी भी आउटफील्ड गीला है। अच्छी चीज ये वापस अपने मार्क पे जाते हुए नजर आए हैं। हारिस रऊफ भी हैं इनके पास, 4 फास्ट बॉलर से खेल रहे हैं जब से HBL PSL सीजन 11 शुरू हुआ है लाहौर कलंदर्स। ये शॉट है स्टीव स्मिथ का, जो कि ऐसे शॉट्स हमने अभी पहले भी देखे थे पिछले मैच में जब इनकी आउटिंग हुई थी। ये स्विंग ऑफ द बैट है, ये बिल्कुल अनोखा है। ये बॉलर को परेशान कर देते हैं, क्योंकि क्रीज का इस्तेमाल ये नए बॉल पे ऐसे करते हैं जैसे आप पुराने बॉल पे करते हो। बिल्कुल विकेटों के सामने आ जाते हैं, और ऑफ के बाहर से आप देखिए इन्होंने इस बॉल को खींच दिया लेग साइड की तरफ। बहुत ही उम्दा इम्प्रोवाइजेशन स्टीव स्मिथ की जानिब से, और मिडिल भी बेहतर हुआ, इसलिए बाउंड्री लेने में कामयाब। अब एक फील्ड चेंज किया गया है, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर पे ले गए। दोनों जो टांग के फील्डर्स हैं वो बाउंड्री पे रख दिए हैं शाहीन अफरीदी ने। पिक नहीं कर पाए, बैट की आवाज लगता है आई है। अपील जोर से कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन ऐसा लगा 2 साउंड्स हैं। अब क्या फैसला करते हैं ये विकेट कीपर और बाकी साथियों की मदद से। ले लिया शाहीन अफरीदी ने रिव्यू। ऐसा लग रहा था कि इशारा किया है, पर शायद नहीं किया, गलतफहमी हुई। 1 ओवर के बाद 7 पे कोई खिलाड़ी आउट है। पाकिस्तान में बना, दुनिया चला रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM। पाकिस्तान की पहचान SLM। हेड टू हेड अगर देखें HBL PSL में, तो आपको पिछले 5 मैचेस का खुलासा यह है कि भाई 3 मुल्तान और 2 लाहौर के हैं, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पे देखी जा सकती है। अब ये टीम्स आज की तारीख में 1 साल बाद एक अलग ही मोड में है। काफी रीशफलिंग हुई है, क्योंकि इस बार ऑक्शन हुआ है, तो बहुत सारी रिटेंशंस जो होती थी हर साल वो नहीं हुई, लेकिन कोर वही है किसी हद तक। उबैद शाह को लाए हैं, आपने बात की थी कि उन्होंने यंगस्टर्स के साथ किया था, यहाँ भी फास्ट बॉलिंग यंगस्टर है। अच्छा टक किया, साथ साथ फॉलो किया साहिबजादा फरहान को उबैद ने। रूम बनाना चाह रहे थे फरहान, लेकिन अच्छी क्लेवर बॉलिंग। ये लास्ट बॉल थी सना, जो हमें लगा शायद कि रिव्यू है। जब पहली नजर में देखा तो ऐसे लगता था बैट के बड़े करीब से गई, और दूसरी आवाज भी थी, और ये अब प्रूव हो गया। इसीलिए शाहीन अफरीदी का फैसला अच्छा था रिव्यू ना लेने का। कंसिडर जरूर किया था, पर अच्छा फैसला बाद में रिव्यू ना लेने का। जी मेरा भी अच्छा फैसला था। मैंने कहा कि 2-2 आवाजें आई, आपने सुना ही नहीं। और आपने ये भी कहा कि रिव्यू ले लिया गया ऑफ एयर। हाँ, उन्होंने इशारा किया था, लेकिन बॉलर को बुला रहे थे। ये थोड़ा सा अपने आप को ऑकवर्ड पोजीशन में लिया स्मिथ। पहले तो रूम बना के इसको पैडल करना चाहते थे, फिर सोचा कि गेंद और बाहर चली गई है तो स्कूप करूं, और टांग पे ही लेके जाना चाहते हैं। 2 फील्डर इनके लिए अब टांग पे रख दिए गए हैं। जैज फैन पाल्स, पहला कैप्टन कौन था जिसने HBL PSL का टाइटल जीता? 4 ऑप्शंस आपके पास मौजूद, सरफराज अहमद, मिसबाउल हक, शाहिद अफरीदी, डैरन समी। करेक्शन कर नहीं पा रहे दोनों बैटर्स। अपने रूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फील्डर्स बड़े दोनों लेग साइड पे लिए, जैसे सना ने बताया, तो ये ऑफ साइड ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए। और जो यंगस्टर्स की बात आपने की, जो मुल्तान सुल्तान के टैक्टिक्स की बात की, उबैद शाह पहले ऑब्वियसली काफी खेल चुके हैं HBL PSL, लेकिन दूसरा ओवर फिर भी एक जब ओवर हो चुका होता है, नर्व्स सेटल हो जाती हैं। शाहीन अफरीदी का काफी अच्छा ओवर, 7 ही रन दिए, तो नर्व्स थोड़ी सेटल हो जाती हैं। उबैद शाह उसको बहुत ही अच्छा
साथ देते हुए, और प्लान बिल्कुल साफ जाहिर है, कोई ऐसा बॉल नहीं देना जो स्टीव स्मिथ जिसको टांग पे ले जा सके। इस बार पेस कम की उबैद शाह ने, कदर 10 किलोमीटर पीछे आए, 136 138 की स्पीड पे कर रहे थे गेंद। आखिरी गेंद जो थी वो 122 की थी। ये स्टीव स्मिथ की बाउंड्रीज हैं जो पिछले मैच में उन्होंने लगाई थी। बहुत ही शानदार शॉट्स है इसमें, कुछ पिकअप शॉट, लेकिन अगर आप देखें तो ज्यादातर लेग साइड पर ही नजर आता है, क्योंकि ये विकेट्स के सामने आ जाते हैं और ऑफ के बाहर की बॉल को खींच के लेके जाना चाहते हैं लेग साइड पे। तो तकरीबन 60% से ऊपर, 80% से ऊपर टांग पे ही रन्स किए इन्होंने। इस बार तेजी से शॉट मारा और इसकी स्पीड का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बड़ी उम्दगी से डाइव लगाई आसिफ अली ने। मुझे लग रहा है कि शायद जब बॉल इनके हाथ में थी ये बाउंड्री के साथ कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन एफर्ट के 100 में से 100 मिलेंगे इनको। बहुत ही उम्दा एफर्ट यहाँ पर, और जब रोल कर रहे थे और आगे बाउंड्री की तरफ जा रहे थे, इन्होंने हाथ चेंज किया बॉल को थ्रो करने के लिए। ये चेक करें, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर, और साथ ही इन्होंने लगता है टच कर दिया। आप सही कह रहे थे, कोशिश इनकी पूरी थी कि हाथ को बदलते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बॉल इनके हाथ में था और टच कर दिया बाउंड्री रोप को, ऐसा यही लगता है कि बाउंड्री दे दी जाएगी। बहुत ही जोरदार शॉट था, यहां तक पहुंचना भी बड़ी बात थी आसिफ अली की, क्योंकि ये बॉलों से दूर जा रहा था और थोड़ा इनकी अच्छी डाइव, थोड़ा जो पानी है घास में वो भी इनको आगे ले गया, फिसलते हुए बाउंड्री से जा टकराए। बॉल उनके लेफ्ट हाथ में है, लेकिन राइट हाथ मेरे ख्याल से लग चुका है बाउंड्री को। जब आप इस एंगल से देखेंगे तो बाउंड्री कुशन्स हिलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी बॉल हाथ में है और यहाँ पे टच हो गया सीधा हाथ जो है वो बाउंड्री रोप्स को। और ये ऑफिशियल डिसीजन आ गया, 4 रन का इशारा ऑन फील्ड अंपायर का। तो इस तरह से अब 13 हो गया स्कोर, लेकिन कहीं भी किसी भी हालत में ये उस स्कोर के करीब नहीं जो आगाज मिला था लाहौर कलंदर्स को। और इसका क्रेडिट जाता है मैं शाहीन को, तो है ही मंजे हुए बॉलर उबैद को। अभी तक 6 रन दिए हैं उन्होंने इस चौके के बाद और 5 गेंदें कर ली। अच्छा खत्म करें इस ओवर को। तो शानदार गेंद, शॉर्ट बॉल थी, अच्छा बॉल था और इस तरह से ओवर मुकम्मल हो गया। 2 ओवर्स के बाद मुल्तान सुल्तान 13 बगैर किसी नुकसान के। पाकिस्तान में बना, दुनिया चला रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM। पाकिस्तान की पहचान SLM। लजीजा रसमलाई घर में फौरन तैयार। चलिए सर, आप एक्सप्लेन करें कि ये हो क्या रहा है। हॉरिजॉन्टल बैट से इन्होंने कोशिश की, क्योंकि या तो बहुत ज्यादा जोर से ट्राई कर रहे हैं हर बॉल पे छक्का लगाने की, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग हमने देखी थी पहले लाहौर कलंदर की, उससे बिल्कुल बरक्स है। वी गो टेल सेल्फी मोमेंट, और ऐसे सारे लम्हात आप कैप्चर करके अपने पास महफूज कर सकते हैं। और यहाँ पे तारीफ करनी होगी लाहौर कलंदर के टैक्टिक्स की और एग्जीक्यूशन दोनों की। हम मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था कोई प्लान से आए हैं। लाहौर कलंदर बहुत अच्छे प्लान से आए हैं। एक बाउंड्री के बाद उनको समझ आ गई कि स्टीव स्मिथ ने रिलीज शॉट सारी टांग पे ही खेलनी, उनको ना वो ऐसा बॉल दे रहे हैं और दोनों फील्डर टांग पे ही बाउंड्री पे भेज दिए गए। मुझे लग रहा है स्टीव स्मिथ की बस हो गई, अब ये कुछ मारेंगे बहुत बड़ा शॉट। ओह शानदार, अच्छी बॉल, उसको फॉलो करते हुए क्या शार्प बाउंस और राइज मिल रहा है यहाँ पे। कैरी देखा आपने, कीपर ने कहाँ इसको कलेक्ट किया है। उम्मीद इनकी थी, अंपायर की तरफ देख रहे हैं कि हाइट के हिसाब से मुझे वाइड मिलनी चाहिए थी। लाहौर कलंदर एक ही मैच हारा है, वो भी बिल्कुल आखिरी ओवर में जाके, और वो भी 128 रन को डिफेंड करने चले गए थे। तो बॉलिंग लाइनअप इनकी बहुत तगड़ी, इसीलिए ये पहले बारी करना चाहते थे।
और बहुत अच्छा टारगेट ये ऑलरेडी लगा चुके हैं। प्रेशर सब का सब मुल्तान सुल्तान पे। हल्का बॉल कराया था और इसको भाप लिया फौरन। स्टीव स्मिथ ने थोड़ा सा मिली सेकेंड एक्स्ट्रा वेट किया और फिर खेल दिया इसको शानदार तरीके से। ये बेहतर बैटिंग है क्योंकि यहाँ पर पहले से सोच नहीं लिया कि मैंने टांग पे बॉल लेके जाना है। बहुत उम्दा बैटर हैं और थोड़ा सा अपने आप को इसी तरह टाइम देंगे तो बाउंड्रीज आने में ज्यादा देर लगेगी नहीं। ये रोका जो आपने बात की और उसके बाद अपनी मर्जी के गैप में शॉट को मारा। और बोल्ड हो गए। स्लॉक करने की कोशिश की और उनका पूरे डिफेंसेस के थ्रू का के गेंद मिडिल स्टंप की जड़ में जा लगी। बहुत ही उम्दा बॉलिंग यहाँ पे शाहीन आफरीदी की। लेंथ को बदलते रहे, लाइन नहीं छोड़ी, विकेट्स में रहे। सिर्फ एक बॉल बाहर किया जिस पे चौका आया, बट वापस अपनी लाइन पकड़ी स्टीव स्मिथ, जो कि फिर लेग साइड पे ही जाना चाहते थे। शाहीन आफरीदी ने बहुत उम्दा लेंथ और विकेट्स में रखा बॉल को और चलता किया स्टीव स्मिथ को। स्टीव स्मिथ ने बनाए 9 रन। मुल्तान सुल्तान 17 पे 1। पाकिस्तान में बना, दुनिया चला रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM। पाकिस्तान की पहचान SLM। फिलिपे आए हैं नंबर 3 पर। आखिरी गेंद इस ओवर की और ये स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। उम्दा ओवर, कामयाब ओवर। 3 ओवर्स के बाद 18 पे 1। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर बेसिकल, मतलब कमाल। एक्स्ट्रा फिनिश, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। पाकिस्तान में बना, दुनिया चला रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM। पाकिस्तान की पहचान SLM। बहुत ही उम्दा आगाज पहले बैट से, अब बॉल के साथ लाहौर कलंदर्स का। और ये देख के अच्छा लगा कि अब शाहीन शाह अफरीदी ने फैसला किया कि मैं दूसरा ओवर भी वो बैट से ही करवाऊंगा। और स्लो बॉल, आउट होने का खतरा और आउट। शाहीन शाह अफरीदी ने कैच कर लिया और इस तरह से दूसरी विकेट गिरी। फिलिपे आए और चल दिए और डिजर्व करते थे वो बैक विकेट। बहुत ही उम्दा पिछला ओवर से 5 रन लिए हुए थे उसमें और जो दबाव मुल्तान सुल्तान पे रखा उसको, उससे विकेट लेने में कामयाब हुए। बहुत ही उम्दा बॉलिंग यहाँ पर। स्लोअर वंस का बेहतरीन इस्तेमाल, बाउंसर का बेहतरीन इस्तेमाल, डिजर्व करते हैं इस विकेट को। और जॉश फिलिप ना विकेट के पीछे इनका दिन अच्छा, ना बैट के साथ। एक ही रन बना सके मुल्तान सुल्तान 18 पे 2। पाकिस्तान में बना, दुनिया चला रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM। पाकिस्तान की पहचान SLM। और जबरदस्त सहूलियात, वो भी बिल्कुल फ्री। सब कुछ तो है इसमें। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर बेसिकल, मतलब कमाल। एक्स्ट्रा फिनिश, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। Shan Masood then
His stroke play very easy on the eye, and Calander's on the attack with a slip in place. Yeah, proper deception. Clock in 132, 133, get up to 135 and drop that pace all the way down. The thing is as well, the width. When you bowl a slower ball, if it's on the stumps and it's full, you can just work it even though you're deceived. Because it's outside off stump, you lose control of the shot. It's not just the slower ball that he bowled, but it's the way and the direction and length that he bowled the slower ball that was just as effective. Not the middle of the bat, but we'll find the boundary somehow. They will take it. Anything will do right now. Traditional Shan Masood, classy elegance, but we'll take this nonetheless off in a portion. The intent is there. A little bit of luck. And we made the most of the power play. Only a couple balls left. Maybe the power play ends at 3.5 overs. Gone out. We'll take some catching. We'll take some catching. Might fall say. Oh, whoa, 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 whoa. Geez, I hope everyone's okay. I really do, because that had a real problem written all over it. Two players are still down. This might not be good. Two players who were fully committed to taking that catch. You had no idea that the either was there, or either of them was there. Let's just hope this doesn't look as bad. Both players absolutely desperate to try and take the catch. I hope he gets up okay. We'll see from the replay here that both players are totally unaware of the other. But, let's hope. Oh, that could have been so much worse. Tricky one as well. Normally just say the person coming in, it's your catch, call loudly. But it felt as though it's one of those that felt as though it went up and it just kept blowing away from the field and running back. Well, we just got a little break in play. That is today's winner of the exchange on Golden Coin. Hamid Akram, well done. Very well done. You are the winner. Great. Well, Imran is up. But maybe the real problem there, the shoulder, but let's just hope that he's going to be okay. You're right, Carlos. Coming in, fielder coming in, surely had to make himself known. I don't know if he did. Well, they only know, but and yeah, sometimes you try to kind of understand, try to get a little clue of what the ball would do based on the shot. Normally when you get a top edge, the ball normally spoons more upward than outward. You could sympathize with Imran running back from short third, and he probably thought, you know, this is mine, it probably won't carry. Likewise, Asif Ali, we saw gut-busting effort on the boundary from him laterally to try to save forward in the other direction, this time trying to take a catch. So it's full commitment. And coming on to the field, Sri Lankan, Dunit Olalage. Imran had an exciting knock with the bat, and unfortunately not the way he'd want his night to end. We're just hoping that fit and firing can continue either tonight, but more importantly moving forward in the tournament.
So just one ball left in the power play. Just a quick reminder, it's 13 overs per side with the rain. Final ball of the power play goes for just one. Excellent work in the power play. That is a terrific effort. It really is. Bowlers under pressure, and they delivered. So field will spread, obviously, just four in the circle. Just one. We really need something pretty special from here, Multan. Sultans, 28 for 2 from 4. यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स रेफ्रिजरेटर्स की नेचर लॉक टेक्नोलॉजी रखे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश पूरे 20 दिन तक, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। अस्करी जबरदस्त करंट अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि इस अकाउंट में मिले बेशुमार जबरदस्त सहूलियात, वो भी बिल्कुल फ्री। सब कुछ तो है इसमें। पाकिस्तान में बना, दुनिया चला रहा है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM। पाकिस्तान की पहचान SLM। That'll be a wide to start the 5th over. Okay, here we go. Here comes the Osaka power run. Here we go, fully charged like a fresh battery at 100%. Go on, get going. Not bad. That's a bit more like it. We haven't seen many of those in the run chase. Much from Farhan. Coming off a fantastic ton and that big chase for Multan. Sultan throws his finger over. It's that length that he picks up so quickly. Sajjada Farhan predominantly hangs back on that back foot. Packs a punch here. First 6 of the innings for Multan. That is KFC scholarship as well. For every 6 hit during the game, there will be a scholarship awarded to a deserving student. 12 in this game so far. 11 in the first innings. And Sajjada Farhan after the first one, we'll hope for a few more. Just waiting for the ball to come back. Got a lot of work to do here, the Sultans. They're a long way behind. Lahore at the same stage. After 4.1 overs, can you believe Lahore was 73 without loss? And the bowling really has been the complete opposite. The Sultans were very, very sloppy with the ball and in the field, whereas Lahore have been very disciplined, great skill. All right, we've got the ball back. Up in the air. Has he got it well enough? He has. I thought that came off the toe of the bat, but it's gone about 15 metres over the rope. A very signature style hit from Sajjada Farhan. Saw this throughout the T20 World Cup just prior to this tournament. It's in the slot again, but he's got this unique ability. It looks like it's a horizontal hit, but really hits the ball right out of the centre. Light and fast. Jazz. 5G Super 6. That won't be a 6. On this occasion, they scramble back for a couple of runs. So now just a little bit of momentum, which they've been lacking
Stephen Smith's already been dismissed, could not get going tonight. Josh Philippi only lasted a couple of deliveries. Now they're checking whether that is a waist height no ball. So just a little bit of a delay here as we look at a replay. Has to be above the waist height, standing in the crease in your batting stance. I think that's okay. On the way down on impact, so should be a legal delivery. 15 off 3 in this over from Shaheen Shah Afridi. Very well bowled. KFC helps make moments memorable with your Yars. Order KFC and enjoy Yari moments at home. KFC makes every moment a Yari moment because Yari, KFC, Wali. Is that right? Rouge? Sliced away, should only be a single. Greg blew it. 10 out of 10 on that. Brilliant. Yeah, do you know what Yar means, by the way? Friends. So it's about friends coming together and making some good memories. Oh, Multan Sultan will have to make some big strides here. The asking rate over 13 and climbs with every delivery. That's why they can't leave too much behind. Only a 13 over game. And Shan Masood needs to pick up the pace here. So this will be Shaheen Afridi's last over. He can only bowl 3 tonight. Clipped away. Good shot. Good power. Some bottom hand through that. So a 4 to finish off that over. That's the end of Shaheen Afridi. It's 48 for 2. यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स रेफ्रिजरेटर्स की नेचर लॉक टेक्नोलॉजी रखे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स फ्रेश पूरे 20 दिन तक, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। अस्करी जबरदस्त करंट अकाउंट खुलवाए, क्योंकि इस अकाउंट में मिले बेशुमार जबरदस्त सहूलियात, वो भी बिल्कुल फ्री। सब कुछ तो है इसमें। पाकिस्तान में बना, दुनिया चला रहा है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM। पाकिस्तान की पहचान SLM। अस्करी जबरदस्त करंट अकाउंट खुलवाए, क्योंकि इस अकाउंट में मिले बेशुमार जबरदस्त सहूलियात, वो भी बिल्कुल फ्री। सब कुछ तो है इसमें। Farhan continuing his good form, coming off 100 in his last game. Well, that's smashed out in the ground. Won't be 4. They're going to push for 2. Sent back. So just the single in the end. Let's go down to Zainab, who's got the Hamare hero with her. मेरे साथ मौजूद हैं आयशा मुमताज़, जिनका सरोदा से ताल्लुक है एंड बॉक्सिंग चैंपियन है, बहुत से मेडल्स भी जीत चुकी हैं और बहुत अपना नाम बनाया है। आयशा, कैसे शुरुआत की बॉक्सिंग में आना, किस तरह से इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे एज अ हीरो इनवाइट किया। बेसिकली मेरी जर्नी का स्टार्ट 2021 में हुआ, जहां मैंने सरगोदा जैसे एक छोटे से शहर से अपना बॉक्सिंग का करियर का आगाज़ किया। वहां पर मुझे अच्छे कोचेज़ मिले जिन्होंने मेरे पर भरपूर मेहनत की। उसके बाद नेशनल में जितनी भी नेशनल हुई उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया, और इस तरह ही पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने मुझे एज अ इंटरनेशनल अपने मुल्क का नाम सर बुलंद करने के लिए एक इवेंट दिया, जिसमें मैंने एशियन ब्रॉन्ज में मैंने वियतनाम को बीट करके ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उसके बाद मुझे वर्ल्ड रोड एंड बेल्ट इंटरनेशनल यूथ चैम्पियनशिप में मैंने चाइना को होस्ट करके सिल्वर मेडल हासिल किया। इसमें सबसे ज़्यादा जो मैं शुक्रगुजार हूँ वो पाकिस्तान आर्मी को, जिन्होंने मुझे फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट किया।
अच्छा, काफ़ी ज़्यादा मेडल्स आपने हासिल भी किए हैं, तो इसके पीछे जो मेहनत जाती है, जो ट्रेनिंग जाती है, फिटनेस के ऊपर, अपनी स्किल के ऊपर, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ कि क्या-क्या पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या मेहनत चल रही थी? बिहाइंड द सीन जैसे जो कोचेज़ होते हैं अच्छा, अब आपको थोड़ी देर के लिए मैं रखूंगी क्योंकि एक विकेट गिर गई है. इट्स बैक टू यू गाइस इन द कमेंट्री बॉक्स. Thanks, Zainab. Because it's a big wicket Farhan was talking about. Was in good form. Another good contribution tonight. Coming off 100. Mustafiza is the bowler and went way up in the air. And in the end, a good catch. Abdullah Shafiq, a safe fielder, and it's again the fizz and the slow delivery that gets the better of Saibzada Farhan. Good handy knock, 24 of 15. Multan Sultan's 50 for 3. पाकिस्तान में बना दुनिया चला रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM. पाकिस्तान की पहचान SLM. Dolan's Prema-Line No Frost Refrigerator range with a convertible zone. Switch temperatures from -20 degrees to 5 degrees with a simple touch. Dolan's Prema-Line, designed for better. टेस्टेड स्टील ही तो है असली शॉट. आयशा, बस जाते जाते ये जरूर बता दें कि आगे की क्या एम्बिशंस है. इस साल कोई है कि मैंने इस टूर्नामेंट में जाके मेडल्स हासिल करने हैं, या आगे क्या आपका प्लान है? जो बॉक्सिंग का सबसे बड़ा इवेंट है वो है ओलंपिक्स. सो आगे आने वाले वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफायर राउंड में मैंने पार्टिसिपेट करना है और उसको क्वालिफाई करना है, और उसके बाद मैंने ओलंपिक में अपने लिए गोल्ड मेडल हासिल करना है. और अगर इसी तरह ही हमें ट्रेनिंग टूर मिलते रहे तो हम इंशाल्लाह ओलंपिक में गोल्ड जरूर ला सकेंगे. चलें, इंशाल्लाह जरूर उम्मीद यही करते हैं कि आपके सारे ख्वाब जो है वो पूरे, और इसी तरह जो है आपको और कामयाबी हासिल हो. थैंक यू सो मच आयशा. Away just the single. So excellent over so far from Mustafiza. Already got a wicket. So that's the 50s come and gone now for the Sultans, but they've got so much work to do here. Again, a slow ball, and it'll be just a single. So great start there for Mustafiza. 53 for 3. पाकिस्तान में बना दुनिया चला रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM. पाकिस्तान की पहचान SLM. Raza into the attack. Pepsi, ball for a cause. Pepsi is contributing. Helping equip future stars with the gear and support they need to rise. So Raza coming around the wicket now to Masood.
that's hit hard. Look out, umpire. He's down. Great shot, though. 4 runs. Oh, I tell you what, that is great reflexes from Chris Gaffney. That was hit with some brute force and straight back at him. Watch this. Great shot, but watch this from Chris Gaffney. 1, 2, 3, go. Oh, a sting strike that, and a good one to start here from Shan Masood to Raza. Short ball and hit away for another 6. Excellent batting here from Masood. Really good this. Just a marginally short in terms of length from Sikandar Raza. Very good to pick it up, Shan Masood. There were shouts of catch it, but it sailed the distance with some ease. Now 4 follows a 6. 11 of the first 3. Got to keep going. Sting 6, that one. That's hit hard as well. So he's getting hold of Raza here. Let's need to keep going. They need 19 runs and over from here. Ashton Turner, the captain, what's he got? Oh, low arm tries to catch it. Oh, he nearly ran past it. Ruben Herben there, South African, into the side today. Oh, they're going at 10 runs and over. The problem is it required double that. 20 runs and over. This is really good from Ruben Herman. The soggy outfield just causing the ball to plug. So he had to make amends there. Saved a couple of runs. Ashton Turner is someone, once he gets on a roll, can go and score really, really quickly. Well bowled, just about a Yorker. So that's the end of the 7th. It's 68 for 3. Dolan's Premaline No Frost Refrigerator range with a convertible zone. Switch temperatures from -20 degrees to 5 degrees with a simple touch. Dolan's Premaline, designed for better. पाकिस्तान में बना दुनिया चला रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM। पाकिस्तान की पहचान SLM। पाकिस्तान में बना दुनिया चला रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM। पाकिस्तान की पहचान SLM। That's the equation, 118 off 36, so a lot to do here. Hang on to the ball. No run. Go big or go home. That's exactly what they need to do right now with life-size J. bottles. This is content swinging straight for a craw. Create your video, tag at j.fragrances.cosmetics. Use hashtag #winnercraw with J. A couple of good overs. There was 20 of Shaheen Shah Afridi, and then the recent one, that of Sikandar Raza, went for 15. In between that, Mustafizur Rahman bowled his further, went for only 5 runs. Great shot. He's flying, Masood. He's doing everything that he can do right now. He's gone to 30 off 11. And all 30 of those runs have come in good quality cricketing shots. 5 boundaries and 1 6. The slow one just rolled his finger. Just felt like it got stuck in his hands. Once again, short. Hits it up and over. Really effective knock here, striking at 272. Shan Masood, and he needs to keep going. Another slow ball and hit hard and straight. Brilliant from Masood. He just needs someone from the other end to go with him.
Just feel he's realized that Mustafizur Rahman will rely predominantly on slow delivery, so he can hang back in the crease here, Shan Masood. There is protection down the ground, but he has his ability to hit it flat back with a horizontal bat or drag it into the leg side. The slow deliveries keep coming one after the other. A mini meeting just to make sure the plans are well understood between bowler and captain. Yeah, when you're facing Mustafiza, you do have to just set up for a slower ball, most deliveries, and then react to the quicker one if he does bowl that. Another slower ball, won't be out, they'll scramble a leg by. Pretty sure that would have pitched outside leg. Just checking with his bowler or the keeper just to confirm where that ball pitched, but they're not going to go upstairs. See, still some moisture out there in the outfield. Just about all the fielders have got those towels out there just to try and keep that ball as dry as possible, especially the seam. Okay, the captain, Ashton Turner, can he get going? 7 off 6 at the moment. No, he can't. Why is he throwing that? Why is he throwing that? I know they've got plenty of runs to play with, but that's uncalled for. Nasibullah Khan with the gloves behind the stumps. Rush of adrenaline and really more than anything else. Loud, big no, nobody's going anywhere. Needless. And they can afford to smile and chuckle about it because the opposition requires north of 20 runs and over. I don't think Shaheen Shah really would have had a smile had the equation been different. 11 of the over. Shan Masood here will be looking for another boundary to close this one out. Keep getting those boundaries and close overs out well. Oh, that's very well fielded. They might want to have a look at that, but that is excellent covered. Good ground after it's 81 for 3 after 8. पाकिस्तान में बना दुनिया चला रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM। पाकिस्तान की पहचान SLM। अस्करी जबरदस्त करंट अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि इस अकाउंट में मिले बेशुमार जबरदस्त सहूलियात, वो भी बिल्कुल फ्री। सब कुछ तो है इसमें। पाकिस्तान में बना दुनिया चला रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM। पाकिस्तान की पहचान SLM। Harris Ralph, so good in this phase of the game. Held back. Yorker bowler mixes his pace up. It's been a masterclass, that's the truth. As far as I see it, been a masterclass so far from the Calanders with ball in hand. International field, international bowlers. Ashton Turner trying to do something remarkable here. Just watching the batter, just watching where he went and followed him. Club Pepsi, the DJ pumping the tunes, always lively in there. Just a little expensive in the last game, Harris Ralph, but that is going to happen from time to time when you're given this responsibility to bowl in this phase of the game.
Look at the runs required, 102 of 29, but this sort of tournament you always have to keep one eye out for the net run rate. So even though Multan Sultans will think we might not win this, but you need to get as close as possible. So make sure that even if you lose it, the margin of the loss is minimal. Brilliant, absolutely brilliant. They love throwing the ball at the stumps, and yet again it's cost another run. Again, there was no real need there. The job was done, saved the boundary. Yeah, it was brilliant. He saved the boundary with that diving stop, then had a go. You've seen this a few times. Multan Sultans and Lahore Qalandars. Unnecessary. He's given away runs. Pushing for two, but surely settled for one, yeah. Time to enjoy cricket with Pakistan's #1 tea brand, Tapal Danedar, and the Tapal Tea Lounge. Great effort this. Sit and watch your teammates do a brilliant job, and then you too, it's your turn. 3 balls, 5 runs. Just restrict those boundaries. Couldn't on this occasion. Oh, yes, no. Brilliant work in the deep. I think he's got away with it. I think that's okay. They'll check, of course. I think the momentum had to push him back. Sikandar Raza, what a cricketer he is, with bat, ball and in the field. See this all the time. Does he touch the skirting or not as he releases the ball? Extremely close. Such a tremendous skill to be able to catch the ball and be aware of the skirting. That was extremely close. They'll have a close look at that. Right foot, is it on the skirting? Has it touched it or not? Just whether there's any part of that back leg hitting the cushion, as you say. I think that bit's fine. I think the release is fine. Just whether that back leg is touching, any part of that is touching the cushion. It's so difficult to see. That's the problem, whether it just touches there on the way up. Good luck making that decision. For effort, it's 10 out of 10 for Sikandar Raza. It's just whether it's going to cost a boundary. I'm not sure that by keep seeing it time and time again, it's going to make it any easier. Can't really detect any sort of movement on the skirting, but is there a little touch? Is there a scrape? I think just give it... Well, I'm surprised at that a little bit. I'm surprised. I thought it was a little inconclusive, if I'm honest. Decision has been made. It has gone the way of Multan Sultans, who pick up a boundary 6.
once you get so many runs on the board, it's very difficult for the chasing team to actually get rhythm in the batting because they know they have to go after every delivery, and sometimes the shortened games become a little one-sided. The Hanif Mohammad cap for the highest run getter and the Fazal Mahmood cap for the leading wicket taker. Both will get their homes powered by Inverx solar energy. Slow ball to finish the over, won't quite carry. So 9 gone, 95 for 3. मतलब क्या सॉन्ग बेच दिया मतलब कमाल एक्स्ट्रा फिल्स एक्स्ट्रा टेस्ट स्ट्रॉन्गर पेप्सी जो टेस्टेड नहीं है ना वो आउट आउट The fizz to continue. So far, he's bowled about 60% of his deliveries in the competition as cutters, and he's generally done that again tonight. He's got such a supple wrist. That's why his cutter is very difficult to spot. And also, he gets purchased off the surface too. Human is bowling seam up, that wrist locks and it's quite flexible too as he follows the seam. And because of the cutters, it means the captain can set a field in front of square. Third man will be up, fine leg will be up. And as a batter, you're looking to hit in front of square. There's not much value for the ramps because the lack of pace. That, though, is a very good option. It was short and wide, and with third man up, it just gives you that option. 100 up and the 50 partnership also. Short and wide outside off stump. It was slow. Shan Masood just waited a tad and just helped it on its way. Staying strike. Terrific innings this has been under pressure. 44 from 17. Lovely stroke player, eye-catching stroke player, but needs a bit more here. Big appeal and finger straight up. Going for the Yorker this time. And you miss and he will hit. They will just review, I think. TV umpire to director. We have a review for LBW. On-field decision is out. I have checked the feet is a fair delivery. Front on spin vision, please. Go forward. Ball close to the bat. Confirm it all right, please. Yeah. Clearly gap between bat and ball. Satisfied. No bat involved. Ball tracking when you're ready, please. Original decision is out. Pitching
Impacted line, wickets hitting. Tariq stay with original decision. Stand by. You on camera, make the signal. Yes, thank you. Yeah, I may have just done a little more than I initially thought, but I was going to hit the stump. So that is the end of a very, very good innings. 44 from 18, tough run chase, but he certainly played a small part in it. 100 for 4. अस्करी जबरदस्त करंट अकाउंट खुलवाएं क्योंकि इस अकाउंट में मिले बेशुमार जबरदस्त सहूलियात, वो भी बिल्कुल फ्री। सब कुछ तो है इसमें। पाकिस्तान में बना, दुनिया चला रहा है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM। पाकिस्तान की पहचान SLM। What a strike. What a strike. Simple backswing. And job done. Not easy because Mustafa Zir doesn't bowl too many balls and in that position to go for 6. Wasn't mixed up on that occasion. He's very talented. Here's Arafat Minar's first delivery. That is high quality. Over long off. Not easily done. That is a highly skilled shot. A lot of cutters. That was pace on. A full toss that was missed, but it was bang on leg stump. Maybe Chan Masood was setting himself up for another cutter. Through all the variations. The number 1 tea brand, Tapal Danedar, is still being served at the Tapal Tea Lounge. Just the weather for it. Just enough, just for a moment. Abdullah Shafiq there in the deep was interested. He's through his allocation of 3, 2 for 37, 114 for 4 from 10. अस्करी जबरदस्त करंट अकाउंट खुलवाएं क्योंकि इस अकाउंट में मिले बेशुमार जबरदस्त सहूलियात, वो भी बिल्कुल फ्री। सब कुछ तो है इसमें। Somehow he got himself there. Don't throw it. We've seen a lot of that. This was the cutter that was picked from Ashton Turner. Strong swing of the bat. He does have power, but right now it's almost come to the stage where everything has to go. Park View City, free hit for fans, win a prize contest, match number 10 winner, Athar Khalid Awan. Wow, pure reaction really.
Couple of goes at it, I think. Never easy following through. Haris Rauf just hitting the pitch hard, so beating Arafat's shots. Actually toe-ended it, so never really arrived. Maybe just Haris Rauf defeated with lack of pace coming at him. Gone up a long way and not picked up straight away, and in the end, in the deep, that has cost them. Mind you, the run out. Maybe we've got the run out. We'll have to wait and see, but it was picked up late in the deep. TV umpire to director. We have a umpire review for run out at the wicketkeeper end. Can you show me the side on angle, please, for the run out? Just keep rolling nice and slow. Ball in the wicketkeeper hand, and the bat is clearly grounded. I'm satisfied. I'm ready to make my decision for this game. Pretty simple decision, but Asif Ali in the deep, watching it live, we get a great position from our commentary position. He just didn't move really until it was way up in the air. He didn't pick it up, and in the end that cost him. This is what Haris Rauf does as a defensive bowler. He's got extra pace, so he's used that short ball, and then he's got that slow one, so he drops his pace down 10 Ks. And when you're trying to attack him, it is quite difficult because of the fact that he didn't get it up to 145 and then drop it down too. And in this over, we've seen all of that. Hamad absolutely smashed. Not quite out of the ground, but in terms of the playing area, easily goes for 6. Yeah, pace off this time and picked. Arafat Minas has tried a few shots this over. This one came as close as the middle of the bat as possible. It was slow, so he set himself up on that back foot. Now 62 of 13 deliveries. Last couple of games, last game we saw Hassan Ali use the short ball well. He bowled really well that night, and now it's Haris Rauf. Sometimes the fast bowlers forget about the bouncer in a shortened game or in T20 cricket. After they've just been hit for 6, they don't. That's what I love about Haris Rauf. I've watched him over the years. He's got a proper fast bowler's mentality. That will go. I'll take some catching. Oh, whoa, whoa, whoa. I thought he could have done better in the end. Laliga in the deep. I just wonder whether he slightly misjudged that in the end. I thought he felt it might have gone a little further. Either way, he did a pretty good job to stop it going for a boundary. 127 for 4-2 to go. Dolan's PremaLine No Frost refrigerator range. With its Duo Frost technology, independent cooling system keeps food fresh for longer. Dolan's PremaLine, designed for better. पाकिस्तान में बना दुनिया चला रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM। पाकिस्तान की पहचान SLM। Can you do this?
Penultimate over. Ubaid Shah. Should come back for two, yeah. They look very organised, they look very disciplined, Galanders, with the ball. No Shaheen Shah Afridi now. He's bowled his three up front, relying on Harris Ralph at the end, a bit of the fizz in the middle. They've got spin options if they need them. They look really controlled and happy in these environments. Yeah, and look at the bowling attack, and it's high quality all the way through. Well, inside the rope, and you look back at the replay and think, well, slightly messed up there because his weight's all going back. It has been hit high. Has that got the distance? Yes, it has. Well, hits a long ball. Turner, and this will do the captain no harm at all, just to find some runs here. Not quite out of the middle of the bat, but powerful swing of the bat. And it travels 78 meters. Intelligently played. Just using any semblance of pace that's on offer. And runs beginning to flow here for the skipper. Yeah, third in the circle, so he's managed to get it over the top. Held his position. Nicely played. Look at the score in isolation, and 139 for 4 and 11.3. That is impressive. Because of the fact that Lahore Qalandars just batted out of their skin, is still not enough. Make that six more. Flatted, flat bat hit to deep square. Now then, they won't feel they're out of this. You never can in this form of the game, but they're just about keeping themselves in it. Yeah, just in that arc, that baseball swing. Helped it on its way over square leg. He's always going for 6. Now 6 here, Basil, and we're going to start to get excited, aren't we? Skipper looks pretty happy and calm. Ubaid will feel a bit under pressure. 8 to go, 41. Seen these games, and it's remarkable how they get these games close. But it's just meaning that Shaheen Shah Afridi is just going to have to slow the game down a little bit, just get a bit of composure back. Jazz fan pulse, only 30 minutes to go. Answer now or miss your shot. Good response, excellent response. Skipper did a good job there, just to slow the game down a little bit. Just have a word with his bowler and just get a bit of calmness, which that's good work, Skipper. Bad charge is good back of a length, and maybe the skipper just told him, trust your best delivery. That is his length. So important, isn't it, to have your, whether you're captain or not, have your experienced bowler who bowls in these situations. I love watching this. He's just passing on some advice, trying to keep his head nice and clear. Just one, so good comeback, having been belted for a few sixes. 1 to go. 146 for 4. अस्करी जबरदस्त करंट अकाउंट खुलवाएं क्योंकि इस अकाउंट में मिले बेशुमार जबरदस्त सहूलियात, वो भी बिल्कुल फ्री। सब कुछ तो है इसमें। पाकिस्तान में बना, दुनिया चला रहा है सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाला ट्रक टायर हमारा SLM। पाकिस्तान की पहचान SLM। Leg side won't carry. Brilliant effort. Always want to see the fielder go for it, but in the end it was always a little tough.
150 raise. He was always going dipping on him. Very brave to actually go racing in. Never going to carry, but full commitment. Content creation is finally bearing fruit. Ego Tell Pakistan giving every creator a chance to win big this HPL PSL season. Now Sikandar Raza's bowling this over because Haris Rauf can't, because only 3 can bowl 3 overs. Haris Rauf can't bowl this to make that 4, so he's front loaded really, the skipper. He's got Haris Rauf's overs out of the way before the last. Might be taken in the deep nut. Shouldn't have gone for 4, sloppy right at the end. Look at it, he's just having a few problems out there in the deep. The substitute walks in. He's in the firing zone at deep mid wicket. Not been his day defending the boundary or even dismissing the batter with a catch. In the action again. Ball is following him, and would you well, we'll have to check that again. That might be mighty close to the cushion. God, doesn't it follow you? When you're not quite going the way you want, the ball will just follow you. Just not his night in the field. Maybe between the two of them have saved a couple of runs. Imagine just walking in as a substitute. LOHORE came in for Imon. He's in the firing line throughout his little stint in the field. He's thinking, just hit it somewhere else with you for these last couple. I've been busy enough out here. I think that's fine. Right, 2 to go. Would you believe it? Surely going to take this one. Yes, safely bounced. It was always coming your way. Yeah, happy. Shah Freedy, but I think LOHORE is the happiest of them all on the field. Sikandar Raza with a round arm delivery. And again, it was deep mid-wicket. Again in the firing line. But he does well, kept his composure. He does the needful. Rafat Minhas, he goes for 25, 157 for 5, Multan. अस्करी जबरदस्त करंट अकाउंट खुलवाएं क्योंकि इस अकाउंट में मिले बेशुमार जबरदस्त सहूलियात, वो भी बिल्कुल फ्री। सब कुछ तो है इसमें। Hamid Nawaz to finish things off. Will just be 1 down the ground. What a performance that has been. Might just check the front foot here. We're not quite done yet.
Gives Ashton Turner a chance to get to 50. 46 of 21. A free hit to end the game. Struck nicely, goes all the way, finishes with a half century. That's an excellent innings from the skipper, Ashton Turner. He finishes on 52 from 22. And in the end, a pretty respectable run chase, you have to say. Chasing a remarkable score set by the Galanders. Defending champions, and yeah, played like the champions really. Set up with bat in hand and finished with the ball. Lahore Qalandars in the end winning by 20, all set up with that magnificent batting performance. The amount of runs scored in these 26 overs. Fabulous batting, fabulous power hitting. That has meant that Lahore Qalandars again, after that little hiccup in that previous game, have come back all guns blazing. Yeah, I think they're going to go second as well. Run rate's good. They'll end up on 4 points, so back at the top end of the table. They'll look back, I think, in that power play. Obviously, with the ball, they struggle, but big difference how Galandars bowled in the power play and how Multan Sultans bowled in the power. किसको देंगे ये अच्छी बात नहीं होती। आप किसको देंगे? आपको। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मान खान। क्या करते हैं उस्मान? एडमिशन ऑफिसर हूँ मैं। एडमिशन ऑफिस किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी? जी कॉलेज। अस्पताल में? नहीं कॉलेज में। ये बताइए, ख्वाब आपने देखे होंगे? जी बिल्कुल। ऐसा ख्वाब जिससे मैं ना आया हूँ? बिल्कुल ऐसा ही है। वो बताइए। मैंने ख्वाब देखा था बहुत टेंशन वाला। टेंशन? मेरा निकाह हो रहा है। कारी साहब मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आपको ये निकाह कबूल है। मैं जवाब देने की फुल कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी उस टाइम। पैरालिसिस हो गया होगा आपको? पता नहीं। तो ये दुल्हन देखी उसमें आपने? जी दुल्हन देख ली थी? जी नहीं देखी नहीं थी, सिर्फ वो मुझसे क्वेश्चन कर रहा था। अच्छा हुआ यार, ख्वाब में निकाह हो जाता किसी के। तो ये आपने अच्छा यार इंटरेस्टिंग ख्वाब है कि यार वो पूछ भी रहे थे आप। अच्छा, आप कहना चाह रहे थे कबूल है? जी मैं कहना चाह रहा था, मैं तो फुल जोर लगा रहा था अपनी तरफ से। शुक्र है आप ख्वाब ये नहीं था कि मेरा निकाह पढ़ा रहा था। हर किसी के ख्वाब में आ रहा हूं मैं।